Namaste, Jai Hind. Ladies and gentlemen, when you come here, you don't want to leave this place. That's how tranquil, that's how peaceful, and that's how full of love this place is. And we are at the ashram of Sri Ravi Shankar in Kanakpura in Bengaluru South. Gurudev, Namaste. Namaste, Anand. Thank you so much. And such a pleasure to be able to meet you and speak with you. You are somebody who everybody wants a little bit of. And for you to spare time for us is very, very nice. Thank you so much. My first question to you, Gurudev. Pran Prathistha is happening on the 22nd of January of Ram Lalla Virajman. You've played a key role in trying to bring resolution to more than 500-year-long conflict. Can you take us through the process and what you're going through right now, or what you're feeling right now? Yeah, I got involved in this when our Atal Bihari Vajpayee ji, then Prime Minister in 2001, asked me to go and start talking to people and bring mediation. And so at that time, 2003, I suggested the same thing, 5 acres to be given to mosque and that place to be relinquished. And then we continued from 2017. Then though I refused to be part of the committee, mediation committee, because I am not qualified for it. I am not a lawyer. My subject has been science and spirituality, nothing to do with the legal matter. So, but then Gogoiji said, you must, Gurudev, you have to be. In fact, I found out that I am part of the panel in an airport. Can you imagine that? Then one interesting thing I would like to share today is, when this was happening, I was in Chandigarh, and one night at 11:30, I got a call from PM. And PM said, Gurudev, ये आपका तपस्या का फल है. आप इसमें आगे बढ़िए. And दोनों समुदाय का सौहार्द से होना चाहिए. I mean, PM, he had this feeling that everyone should be part of a solution. He had such a concern for the country. I rarely talk to him once a year or sometime, and I don't call him much, and neither he. On one occasion he called when I was appointed as the mediator, then he said, आप करिए आगे बढ़िए. सबका साथ सबका विकास, this is in his जहन में है. It's in his very nature. And even when the judgment came, he very clearly said it should not be seen as a victory over one community, because we're all one. Yeah. It's not victory over one, it's not credit to one and loss to someone else. So that the dard, the pain for the people of the country is something that one should appreciate. And now with this Ram Mandir, which has been a dream of people for so many years, is coming to a fructification, and there's such an excitement throughout the country. People want to be there. Of course, not everybody can go at the same time. But Gurudev, Pran Prathistha, what does this mean? There are those who would say Murti Puja is all pumkam, it's wrong. There are others who believe that the deity resides, divinity resides in the deity, and that's why our constitution gives the deity living rights, perennial living rights. Correct. So, why is this Pran Prathistha important? See, there is in our Shastra they say, Manishinam apsu devata, Manushyanam divi devata, ya balanam loshta kashteshu, yanino atmani devata. Atmani Deva. The devas reside in the Atma, in the self of a jnani. But for Bala, for the common people who are not jnanis, for just simple bhaktas, they will find the deity in in statues, in stone and in wood. And there is a whole vidhan, there is a whole prakriya, procedure for this in the agamas. There are 68 Shaktagama, 108 Vishnu agama, about Vishnu, Vaishnava agama, and 28 Shaiva agama.
I have read all that. I have seen them all. I know Pran Prathistha can be done. See, now there is a big hangama when the mandir is not complete. How can you do Pran Prathistha? Correct. I can challenge them. I can tell them. Now Shri Ram himself did the Pran Prathistha of Shivji. At In Rameshwaram. He did not build the temple first and did the Pran Prathistha. Now Kedarnath, Bhagwan Kedarnath, Murti has been there from before. Yeah. Mandir was built later on. So, a temple can keep building. Yeah, the Garbhagriha is complete. That itself is a big thing. And then when the Kalash Sthapan happens, then another ceremony is there for that. There is a Kumbhabhishekam, like the south we call it. Correct. That is a 12-day procedure. Even the Pran Pratishtha, it's a very meticulous, beautiful science behind it. You know, there is Jaladivas, a stone, first stone is etched and then it is immersed in water for some time. And then in Dhanyadivas, it's put in all the grains. Grains. See, where the life is, it's in the water. And then it is in the grain. And then it's in the sprout. On top of it, you put several herbs. First you put mud on the Vigraha. And then you grow some trees so that the Prana Shakti is brought in. Then when the Prana Pratishtha is done and the rays of sun has to fall on that idol. So, I mean, it is mind-boggling if you just go through the procedure that the Agamas have enunciated in a Pran Pratishtha. And I feel it's a wonderful occasion for the country and people of this country, for the whole world in fact, that such a thing is happening in. So who should conduct the Pran Pratishtha? There are questions about why is the PM the Yajaman? Some people are saying Shankaracharyas are not going. So how is it going to be blessed? Any acharan, there could be some flaws, doshas. But the Guru's job is to remove all the obstacles. Yeah. True. The Guru samarth होते हैं, वो सारे दोष को हटा देते हैं, निवारण करते हैं. See, any date you pick, I can show you there are some flaws in that date. Correct. There can never be 100% correct muhurta. Every muhurta, whether astrologically or numerologically, in whatever science you see, even karma, any action, there will be flaws. Flaws. And if you go on picking up the flaws, you will be nowhere. Correct. Sahajam karma kaunteya sadosham api natyajit. Gita, Bhagavan Krishna said every karma has some doshas, there will be some flaws in it. But you have to see when the positive things are so much, that weighs more. And the Guru's job is to go and clear any of those negativity or negative influence that must have, that would have or could have come into that place. So, is there anything wrong with the PM being the Yajaman? I don't, not at all. You know, ancient days and PM, you know, he is doing so much tapasya, 11 days he is fasting. Yeah, I wanted to come to the Anushthan also, yeah. Anushthan, no, I would request him to please, you don't need to do any of that. You have so much sattva, you want the betterment of the people of this country. My request to PM through this media is, please don't strain yourself. You are pure, your intentions are pure, please you go ahead. And the sadhu, sant and tapasvis of this country, they are there to do, we are there to do the tapasana. He doesn't need to do any tapas. He has to take care, he is taking care of the whole country, the poorest of the poor of the country. He is concerned about the, you know, the nation and the culture. I tell you, nobody has done so much to our Sanatan Dharma or even our Indian culture as our PM has done. I mean, it's not to just put some praise, but it's a fact. We have to acknowledge it. Nobody can say, can deny this fact. Yes, as I said, there are many agamas. Many agamas give very different things. Correct. Some yagyas, of course,
only Dampatis can do. These sannyasis cannot do samyakyas. And some other puja, some other things, everybody can do. And here PM is doing the Pran Prathistha as representing the whole nation. Country. And moreover, it is someone who is really caring for the culture, who believes in it. That is more important. You know, if some PM doesn't even believe in the puja and he comes and does puja, Pran Prathistha, that is not good. Here is someone who is deeply in love with it. Yeah. He's an asthai. He is an asthai, no bhakt. And every year he does Navratri, 9 days fasting. Yes. Even if he goes to America, he does it. So, for a bhakt, there is no rules. There is no rules. I tell you, there is no rules. The other aspect, Gurudev, many people are saying is, why a new Vigraha? There is a Ram Lalla who was in a tat. इतने वर्ष टाट में थे. उनका क्या होगा? Why do you have to bring a new Vigraha, do a new Pran Prathistha and 5-year-old Ram Lalla? See, that Ram Lalla who has already been there will continue to be there. I don't think they are going to discard that. That will be there. But it's nice to have another nice Pratima too. Some say he may be the Utsava Vigraha. So, yeah, there are Charamurti and Sthiramurti, and in a temple, usually both are kept. And that they are doing the right thing. See, if it's a new place, there is a different laws. Correct. I respect Shankaracharyas, they have their right. But there are different rules for different. If it's a new place, which is completely new, then you have to bring the Sanidhya, then you have to do a lot of other things. But this is a place which has been there from ages. Yeah, Ram Lalla was always Virajman. Always there. Virajman there, yeah. Ram Lalla was always Virajman. So you don't have to bring some other, energy there. Energy is already there in the place. But do you think this conflict has been resolved, Gurudev? Do you believe that those who are now saying, Gyanvapi, Krishna Janmbhoomi, because you are somebody who spent years in conflict resolution, not just in Bharat, but the world over. For a conflict to resolve, both sides have to be amiable to a solution. But when we see Gyanvapi, when we see Krishna Janmbhoomi, one gets the sense that some actually want to continue to rub it in. They don't want the conflict to be resolved. Let me ask you your thoughts. There are all type of people on this planet. And if one problem is solved, another 10 would arise. That's the nature of the world. That's the nature of samsara. Yeah. So you can never think that there will be a time where everything will be all right. Challenges do come, and samarth log hai, people who are capable, they will handle that. And we have to continue doing it. Yeah, there is no other choice. Many believe that these contentious issues, especially for Hindus in Hindustan, Gyanvapi, Krishna Janmbhoomi, and some others, need to be resolved before we really take the turn towards moving in the direction that Bharat should move. A nation to grow, become Viksit. These innate conflicts have to be resolved. If that was the case, our central government would have resolved this as soon as they came to power. In 2014-15. That's not the case. They have seen developmental work has begun since even before, but then only few years back, Ram Lalla Virajman, that conflict got solved. So, conflicts keep arising in this country with millions, with so many different languages, cultures, and caste. Where is the end to the conflict? They keep happening. But see, with one vision, with one vigor and enthusiasm, that people are coming together now and working together. That itself is something that's unique to India and laudable with the current leadership. I would say some of credit definitely, of course, it goes to the culture and the people, and the leadership also shares that credit. Gurudev, are Ram and Krishna kalpanik? Are they imaginary?
those who say Kalpanik, it is their Kalpana only. They refuse to see the reality. When they could already find in Bet Dwarka all the ruins of so many years. Now, Harappa and Mohenjo-Dar civilization, they found it's much older than 8,000 year old. Why would you not believe our own history, which has been enunciated in our own traditional Indian systems? But See, there is history written everywhere in Indian system as well. Itihasa itself means it so happened. it so happened. So is it itihasa or is it mythology? History or mythology? It is history, absolutely history. But see, in history also, there are kavis who can glorify it. Yeah. They could say, someone lived for 100 years, someone, say this, they lived 1,000 years. This is all the language of the poets. We must see, in the midst of the poetry, we should extract the history, which is very obvious thing. So you're saying you should extract the tattva out of the entire imaginary leap that's been taken, or the creative. I mean, we are artists basically in India. We would like to see art everywhere. Yeah. So history also we have not depicted very dry. Even if you see the Mughal history, they've all glorified all the Mughal kings as Yes. Indra, Chandra, Devendra, like that. Yeah. Right. So the way of Eastern civilization telling history is more juicy. It's more decorative. It's more heartwarming. Because our history is connected to heart. Yeah. We take pride in the history. Gurudev, the other contentious issue is Sanatan Dharma needs to be eradicated, because Sanatan Pratha, Hindu way of life, is discriminatory, casteist. We are stuck between Varna and Jati. I just wonder, why don't they see the good things also in Sanatan Dharma? Is only caste system in the Sanatan Dharma? It's a complete ignorance. I don't usually comment on ignorant statements. It's people of ignorance. See, even if you have to say something is bad, you have to go into the depth of it. And these people don't look into the depth of a subject. And they just go on rattling something take mileage for a small, short-term political gain. But Gurudev, in the US, they are actually trying to form laws. SB 403 and others, using the ancestral law, they are trying to say that people who come from India are ancestrally discriminated. I'm sure you would be aware. I know, but that has been now nullified. The governor has already, cancelled that law which was about to be made. He vetoed it. ये रुकेंगे नहीं, and you know that if it enters corporate culture in the US, it will come back to It's a disaster. It will be a disaster. See, in this country, in Sanatan Dharma itself, among the 1,000 rishis have come from all backgrounds. Yes. Even our main Sanaka, Sanandana, they are all Dalits. Ramayana, Mahabharata, Yeah. Valmiki and Vedas, they are from that community. So, among the 1,000 rishis, if you count, you can count in fingers, 3 or 4 only Brahmin backgrounds. All other rishis are from all other castes. Even our devatas, even Lord Shiva, Lord Shiva is a Nishada. Nishada is untouchable. So, there was no such rigid caste system like we are being perceived. Of course, in the Middle Ages, it has become much rigid. If you go little beyond, go to the history of our caste system. There has been saints in every caste. Yeah. They have been honored. And there have been Rakshasas or Asuras in every caste as well. Even Brahmins. Yeah, Ravana was a Brahmin. So, Adhyatma is the wealth of this country. See, everything has a place, and definitely this has place when today the mental health is a big issue world over. 1 in every 3 person are affected by mental health issues.
And every 40 seconds, one person is committing suicide on this planet. जी. What is definitely this is the answer. Meditation, spiritual knowledge, Vedanta, Yoga Vedanta principle is the answer. You know, today's Vedanta has been tod marod karke, it has been presented in all buzzy language, buzzy, linguistic quote karke, present kar dete hai. One lady said in America, we have sanitized yoga. Sanitized means what? They have removed Om, they have removed Om Shanti and everything. I said, you have robbed the yoga of its soul. But when you have tried to teach Sudarshan Kriya to people who have nothing to do with the Hindu way of life, who've got nothing to do with yoga, haven't you and your teachers encountered this? Oh, you are yeah, trying to convert us. You are running a conversion. No, we have faced many challenges, not one. Even when I went to Ayodhya dispute, resolution of the dispute, I have many brickbats were coming from both sides. Many Hindus were opposed to it, many Muslims were opposed. आपका क्या इसमें है? आपका इसमें क्या है? आप कहाँ से आ गए? So, when you are in a public work, when you are into anything that you believe is the right thing, or when you know it is the right thing to do, you don't care for what others comment for you. इसमें मान अपमान ये सब का कोई मायने नहीं रखता. Is it so easy to let go of it and not get affected, Prabhu? Because ahem always comes into play, no? Ego comes into play. No? When it comes to play, you don't know it is coming into play. But once you know it is coming into play, you don't get bothered about it at all. That is the power of wisdom. Because when Krishna says aham sarvasya prabhavo, it's okay. We cannot think that aham sarvasya. Then it becomes the aham becomes different. Why do you say that? You look into the Gyan aspect inside of you. Jivanam sarva bhutanam. What does Krishna say? I am the life in everybody. Life in everybody. So are you living? Are you live? And you are him, you are part of him. Rama and Krishna, both are supposed to be upholders of dharma. But both have different... Completely opposite. That is exactly why I questioned you, Prabhu. Ram and Krishna's personality is poles apart. Yes. So that's the most interesting thing. See, even Parashuram. Parashuram is considered an avatar. Yes. But if you look into Parashuram's life, it's very stunning. Yeah. So, मैं कभी फिर इसमें गहराई से मैं बात करूँगा. But what I'm saying is, see, every avatar, everybody has lived on this planet and have shown something very unique. और वो सब हमारे साथ है, जीवन में है. उन सबको आत्मसात करके आगे बढ़ेंगे. But you would believe that all of them stood to uphold dharma? Absolutely. और क्या? Despite the varying methods and polarities in their personality. नहीं तो इतने सारे आगम शास्त्र क्यों बनते? Why we have so many scriptures, so many Upanishads, and even Rigveda. There are 21 shakhas of Rigveda. Yes. 101 shakhas of Yajurveda, 1000 shakhas of Samveda. So even Vedas are Ananta Veda. So many of them are there. So that is the beauty of Sanatana Dharma. There is place for everybody here. Is Murti Puja okay? As I said, I'm coming back to that because many are saying this is being constantly attacked. It's been attacked. Oh, you're idol worshippers, idolatrism. You're pushing this. This is not supposed to be in modern society, today's world. You're not supposed to do it. No. Who can say that? I don't need idol. Someone who has passed through that stage. You come out of there is a difference between one graduating out of school and a school dropout. A school dropout says, I have come out of the school, doesn't mean much. Yeah. But a graduate can say, I've come out of the school. Come out of the school. So the steps of graduation have to be. My final two questions, Gurudev. One is with the kind of work that you are doing. You're present in over 180 countries and
Something phenomenal happened. It was history created on American soil with the World Culture Congress. Are we going towards a more peaceful, sustainable Bhumi, or are we just going to witness so much more conflict? Even as we speak now, there are 3 or 4 wars going on. Correct. You know, Anand, the world history, recorded world history of 6,000 years, you know what it says? Only 268 years in the human history have been there without conflicts. Without conflict. So if we have a few days in between here and there, we are lucky, I tell you. Conflict is part of the world. And our nature is to see, calm it down, douse it down, douse the fire. That's our nature. And we should continue to do it. See the World Culture Festival we had in the National Mall. Ji. You know, it was though it's a cultural and spiritual event, 1.1 million people sat together, meditated 3 days. Wow. Did yoga. It was first time in the American history that so many people congregated. For India, million people is not much. But collective conscience, does that help? Definitely, it helped. You know what happened? That 1 week there was no homicide in the whole of Washington DC. Wow. Every day there used to be 2-3 killings there. In those 1 week there was no homicide, and the police were surprised by that. And they said, we have never witnessed a program that's so peaceful, where we had nothing to do. So that's the power of meditation. You know, it can reform people, it can uplift the spirit. And more of that is necessary. You know, I'm glad that our Home Minister introduced in India, Ghar Ghar Dhyan. Yeah, Ghar Ghar Dhyan. Yeah. This is really caring for people. घर घर में इतना क्लेश है, मानसिक तनाव है, उसको दूर करने के लिए which country really looks after that everybody should prevent mental illness? Tell me. So we have certain very good things in this country that we need to pay attention to. Of course, there are a lot of issues. I'm not saying it's all rosy. There are issues which we need to keep attending to. World also same thing. Conflicts keep rising, but we also see on the other side the good things are also happening. How are you able to keep politics outside of the spiritual realm, especially when events like 22nd January are going to happen? Everybody says it's all to just, polarize votes for May 2024. My final question is, what should people do on the 22nd of January, and how are you able to keep these two aspects separate? See, 22nd January, Shri Ram Lalla Pran Prathistha is happening. It's a moment of celebration. Actually, people were in a mood to celebrate when the judgment came at that time itself. And it is the wisdom of this country, the government and our Prime Minister, to not to let that fire come along, and which would obviously would have hurt others. So people have been holding this wish to celebrate for so long, and now is the chance. 22nd January, now unleash that pressure that you have been holding in order to celebrate. There are 11 lakh Ram temple in this country. Yes, Prabhu. I said this, when the judgment comes, if it has come amicably with everybody's approval, we should have a grand celebration everywhere. And it's very wise that now that celebration is happening, and also they have been called for cleaning the temple. This is also an occasion the Safai Abhiyan. To Safai Abhiyan. Temple should be clean. Every temple should be clean, and it's happening good. So I would say everyone should celebrate. Keep aside the politics for a little while. Later on you can take it. It's going to come anyway after a few months. But now be united. Hindus, Muslims, Christians, Buddhists, Jains, everybody should come together, the whole world, because it's a moment of celebration after 500 years.
True. Yeah. Sarva Dharma Samabhava. That's why the magic of art of living. Thank you so much. Thank you. Great conversation, Gurudev. Thank Very you so much, good. Gurudev. Namaste, Jai Hind, and welcome, ladies and gentlemen. Building up to the Pran Prathistha of Ram Lalla at Ram Lalla Virajman in Shri Ayodhya, we are also trying to talk and dive deeper into our own culture, our own civilization ethos, and this way of life, as the Honorable Supreme Court has called it, the Hindu way of life in Hindustan or in Bharat. Taking the conversation forward, let's try and understand what is the bedrock of our society and this way of life. Is it a belief system? Is it a knowledge system? Is it gender neutral, or is it patriarchal, or is it matriarchal? How does society define itself in its current shape, and how was it actually envisaged over the eons?
Let's try and understand that. Swami Vijnananand is with us, scholar, और बहुत सारे आप कैप्स पहनते, पर अभी मैं आपको स्कॉलर पर ही सीमित रखूंगा. विज्ञानानंद जी, स्वामी जी, आभार. प्रोफेसर नचिकेता तिवारी, प्रोफेसर at IIT Kanpur is with us, and we also have Dr. Sonia, who is a PhD in Sanskritam, and she is also a professor at IGNOU. आप पंडिता भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, so we got some really enlightened minds with us. So let's ask. सोनिया जी, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा. हाँ जी. हमारा जो ये वे ऑफ लाइफ है, इज दिस जेंडर बायस्ड? ये क्या पुरुष प्रधान है? बिल्कुल भी नहीं. इसमें मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जैसे अभी आपने पुरुष शब्द ही लिया, जहाँ से ये संस्कृत का ये जो शब्द लिया है और जिसको देख करके केवल हमने एक मेल बॉडी तक ही इसको सीमित कर दिया है, इसी शब्द की ही जब एटोमोलॉजी अगर हम देखते हैं वेदों में, पुरी शेते इति पुरुष, कि जो पुरी किसी शरीर में निवास करता हो उसको पुरुष कहा गया. तो शरीर में तो कोई भी आत्मा, तो वो चाहे किसी स्त्री फीमेल बॉडी में है आत्मा, वो भी पुरुष, और चाहे जो मेल बॉडी में है वो भी पुरुष है. तो जब आत्मा जिस शरीर में भी वास करे तो वो पुरुष हो जाता है. इस शरीर में पुरी में रहने वाला जो पुरी भी में है, रहने वाला, अच्छा, वह तो पुरुष शरीर है. उसके लिए पुरी हो गया, घर हो गया. अच्छा, और जो भी ज्ञान परंपरा बोली गई है संस्कृत में, जहाँ पुरुष कह करके आया है, वहाँ पर वो उस एक चेतना जीवित उसके लिए कहा गया है. चाहे हम पुरुष सूक्त की बात करें, जिसमें कि पूरी एक सृष्टि प्रक्रिया के उदाहरण से बताया गया है कि पुरुष का शरीर ऐसा, तो पुरुष का शरीर केवल मेल बॉडी नहीं, तो बाइस्ड नहीं है अपना वे ऑफ लाइफ. तो पुरुष का मतलब ही आप ये कह रहे हैं कि एनीथिंग दैट हैज कॉन्शियसनेस, तो ये शरीर एक बॉडी हो गया, लिविंग स्थान हो गया आत्मा के लिए, तो इसीलिए मैं पुरुष हूँ, इसलिए आप पुरुष. मेरा जेंडर मेल है, इसलिए मैं पुरुष नहीं. तो पुरुष शब्द आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है. दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. भाषा भी. ये जो सोनिया बताएगी, तो प्रॉब्लम क्या है कि संस्कृत का ओरिजिनल जो टर्मिनोलॉजी है, उसको सही तरीकों न समझ करके बहुत सारे लोग बहुत सारे गलत मीनिंग निकाल लेते हैं और उसको अपने दृष्टि से मैनिपुलेट करते रहे. सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है. तो असली डिक्शनरी छोड़ के अपनी डिक्शनरी निकाल ली है लोगों ने, ऐसा आप कह रही हैं? बताइए. तो आप ये कह रहे हैं कि पुरुष का मतलब ही वो है. पुरुष का मतलब आत्मा के लिए. और जहाँ शरीर के भेद पर आकर के दोनों के कर्तव्यों में, कार्यों में जहाँ अंतर आता है, वहाँ पर अलग अलग भी बताया है कि महिला के लिए इस तरह के कार्य, या नर नारी पुरुष, जहाँ पर वो एक शरीर पर आकर के सीमित हो जाते हैं, उस शरीर भेद के कारण जो उनके कार्य गुण या कैसे उनका वे ऑफ लाइफ, क्योंकि अंतर तो आता ही है, उसका भी अलग से वर्णन है. पर तो फिर ये कहते हैं कि देखिए, आपके शास्त्रों में लिखा है कि बेटियों को घर पे रहना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, आप शास्त्रार्थ नहीं कर सकते, आप विद्वान नहीं हो सकते. इज दिस ट्रू और फॉल्स? ये सही है कि गलत है? नहीं, जस्ट हियर ऐड करता हूँ मैं. सोनिया ज्यादा एक्सप्लेन करके, क्योंकि खुद गुरुकुल में पढ़ी है. देखो क्या आप है, भी तो पढ़े हैं. मैं भी गुरुकुल में पढ़ा हूँ. मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्या है कि व्याकरण का एक नियम है, एक शेष है ना. जैसे सोनिया बाद में आपको बताएगी, पुत्रश्च इति पुत्रिश्च इति पुत्र. पुत्र और पुत्री दोनों को अगर आपको कहना होगा एक वर्ड में, तो कहोगे पुत्र से. क्यों कहोगे? क्योंकि पुत्र शॉर्ट है, पुत्री बड़ा है ना. तो व्याकरण का नियम है शॉर्ट से बोलना. तो पुत्र हमारे संस्कृत में जहां पर भी आता है, तो वो इम्प्लाइड है कि उसमें पुत्री इंक्लूडेड है. तो इट्स नॉट दैट इट इज ओनली के मेल. इट्स नॉट द मेल, इट्स द संतान. हाँ, संतान के ऑफस्प्रिंग. कई बार कहते हैं इंग्लिश में कह सकते हो ऑफस्प्रिंग के लिए, उसी के लिए. जैसे कई बार एक क्रिटिसिज्म होता है दैट शतपुत्रवती भव. तो बोलते हैं कि वो मे यू बियर 100 sons. दैट ट्रांसलेशन इज इनएक्यूरेट बिकॉज देयर द वर्ड पुत्र 100 चिल्ड्रन है. इट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 100 चिल्ड्रन. 100 चिल्ड्रन. इसका एक और चीज मैं बता रहा हूँ. गाँव में चले जाओ, कोलोकियल लैंग्वेज में जैसे मैंने देखा है, हम लोग के पिताजी वगैरह कभी अपनी बेटियों को बेटी नहीं बोलते थे, बेटा ही बोलते थे. बेटा पंजाब में पुत्र, सभी जगह अभी भी बोलते हैं. उसका कंटेक्स्ट वही है कि उसके अंदर बेटी इम्प्लाइड है, अलग से नहीं है. उसको एस्टैब्लिश करने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन ये लोग जो आजकल इस तरह के जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में इसको ना समझते हैं, वो इस तरह की व्याख्या करने लगते हैं. पर आप गुरुकुल में पढ़ी हैं? हाँ, मैंने गुरुकुल में अध्ययन किया. शिक्षा. तो एक ये भेदभाव होता है जो नॉलेज देने में कि आपको क्या सिखाया जाएगा और एक मेल को क्या सिखाया जाएगा. मैं पुरुष नहीं बोलूंगा आपसे. मेल को क्या सिखाया जाएगा, इसमें क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है?
डिस्क्रिमिनेशन आज वाला पक्षपात ये शब्द नहीं कहूँगी मैं। हाँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि हाँ, दोनों के लिए अध्ययन क्षेत्र अवश्य अलग अलग होते हैं। हाँ। कि एक महिला को क्या पढ़ना चाहिए, उसके शरीर आधारित कुछ प्रायोरिटी अलग रहती हैं। अगर उसको उस दिशा में उसको प्रारंभिक शिक्षा दी जाए, स्वयं की भी इच्छा रहती है अगर वो दूसरे विषय भी पढ़ना चाहती है, तो कुछ विषय ऐसे हैं कि जो स्त्री अगर ज़्यादा जानती है, जिससे वो अपने शरीर का भी स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकती है और उससे आधारित जो भी उससे संबंधित हैं उनका भी वह ध्यान रख करके एक अच्छा समाज की ओर निर्माण कर सकती है। लड़कियां कमजोर हैं, लड़ नहीं सकती, ट्रेनिंग नहीं ले सकती। लेट मी ऐड हियर, क्या है सोनिया उसको समझ नहीं बता रही। देखो हम व्याकरण पढ़ते हैं ना, हम भी गुरुकुल में पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं, हम दोनों की व्याकरण पढ़ते, हम दोनों का व्याकरण अलग नहीं है। हाँ। हमारा वेदांग जो है दोनों एक ही पढ़ते हैं, हम दोनों वेदांग में हमारा अंतर नहीं है। हम उपांग पढ़ते जिसमें 100 दर्शन है, हम सब चीज वही पढ़ते हैं। यहाँ तक कि जहाँ लड़कियों का गुरुकुल है वहां पर घुड़सवारी है, तीरंदाजी है, सभी चीजें हैं। हाँ। कुछ चीजें मान लो अब जैसे है जहाँ नाट्य होगा ना, हाँ। नृत्य होगा, तो हो सकता है स्वाभाविक रूप से लड़कियां ज्यादा उससे एक्सपर्ट होंगी ना, हाँ। तो वो करेंगी, लड़के नहीं करेंगे, है ना। आप समझ, इस तरह का है, सोनिया करे, लेकिन जो बेसिक फाउंडेशनल नॉलेज है तो सब एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। ऐसा ही जैसे शुरू से ही वेद पढ़ना है, मैंने भी वेद पढ़ा है और व्याकरण पढ़ी है, जैसे स्वामी जी ने गुरुकुल लड़कों के गुरुकुल में पढ़ा होगा, ऐसे लड़कियों के में भी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मेल ही पंडित बन सकते हैं, हाँ, शादियां सिर्फ मेल करा सकते हैं, महिलाएं नहीं करा सकती, ऐसा कुछ है हमारे इसमें रीति रिवाजों में? ऐसा कहीं लिखा है हमारे में लिखा है? मैं अगेन वही मैं बोल रहा हूँ कि जहां पर भी लिखा है पंडित का वर्णन है, वहां पर तो शब्द वही है ना, लेकिन अच्छा, हाँ शब्द तो वही है, लेकिन जो ना समझ करके लोगों ने उसको कर दिया। जो पढ़ा हुआ है वो पंडित है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष है, वो सब करा सकते हैं। ये एक विशेषण बन जाता है उसका, जिसने अध्ययन कर लिया। अब वो जैसे कि हम कहते हैं दही जम गया कि दही जम गई, तो वो मेल और फीमेल होने से उस दही शब्द में अंतर नहीं आ रहा है, जो दूध चेंज होकर के दही तो दही है। ऐसे ही जिसने भी उस तरह की योग्यता प्राप्त कर ली है वह पंडित है, वह संस्कार करा सकता है। तो कोई भी पंडिताई का काम, जिसको विवाह संस्कार भी मैं भी कराती हूँ। तो आप कराती हैं विवाह संस्कार? हाँ, वो भी कराती, कोई भी यज्ञ इत्यादि, इस तरह का कोई भी प्रतिबंध नहीं है कि केवल पुरुष ही कराए। नहीं, पर आपको उसका ज्ञान होना, आई थिंक एक और करना उसको बताना चाहिए। जैसे हम लोग गुरुकुल में पढ़े हैं तो हम लोग डेली हवन करते थे, यज्ञ जिसको बोलते करते थे, ये लोग भी करते थे, कोई किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई तो यज्ञ आप भी करते हैं, हवन भी, डेली का नियम था। तो नियम ये कहता है कि जिसको आता है वो करे। हाँ जी, वो आता और आती में भेदभाव नहीं है। ये तो केवल कम्युनिकेशन में आ गया है। हम पुरुष शब्दों के साथ भी जब लिंग लगा करके बोलते हैं, उससे उसके यथार्थ अर्थ में अंतर नहीं आता है। तो आप ये कह रहे हैं, तो यानी आप भी कह रहे हैं कि कोई आपको, अगर आपको ज्ञान है और आप जानती हैं, प्रक्रिया जानती हैं, विवाह करना जो करवाना आप जानती हैं, तो आप कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती, और ये आपको कोई रोकता नहीं? कोई नहीं रोकता है। तो असली क्या हुआ, मुस्लिम पीरियड में जब अटैक हो गया, अटैक कहाँ से प्रॉब्लम हुआ मैं आप बता रहा हूँ। मुस्लिम पीरियड में अटैक होगा तो समाज में सिक्योरिटी नहीं थी। जो बता रहा हूँ, पुरानी परंपरा क्या थी कि लड़कों को और लड़कियों दोनों को यज्ञोपवीत किया जाता था। जनेऊ, उपनयन करने के बाद का नियम पुरानी परंपरा है कि आप उसको गुरुकुल में भेज देते हो पढ़ने के लिए, है ना। जिसको आज भी जब उपनयन होता है तो वहां होता है काशी गमन, है ना, काशी गमन है ना, एक प्रकार काशी जा रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि समाज में सुरक्षा नहीं थी, सिक्योरिटी नहीं थी, क्योंकि मुसलमानों ने हरम में अपनी हमारी लड़कियों को ले जाने लगे। तो हमारे समाज के लोगों ने क्या किया, लड़कियों को यज्ञोपवीत नहीं करो। जब यज्ञोपवीत नहीं करोगे तो उनको भेजना नहीं पड़ेगा गुरुकुल। हाँ। तो गुरुकुल बंद, उन लड़कियों के गुरुकुल बंद हो गए, सेफ्टी नहीं है, तो यज्ञोपवीत नहीं करो तो उनको। तो आप ये कह रहे हैं कि शिक्षा लॉ एंड ऑर्डर की वजह से बंद हो गई? हाँ, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर से। तो अब जैसे वो तो आज भी हम देख रहे हैं कि स्कूल इसीलिए बंद हुआ है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की वजह। लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ तो बेटियां वापस स्कूल जा रही हैं ना। आप देख लो ना, कश्मीर में जा रही है ना, आज देखो क्या प्रॉब्लम हो गया। आप मुझे ये कह रहे हैं कि मुझे तो ये बताया गया सिर्फ बच्चों, बेटे का यज्ञोपवीत होता है, बेटियों का नहीं। आप ये कह रहे हैं मेरी बेटी है और मेरा बेटा, मैं दोनों का यज्ञोपवीत करा सकता हूं। आप जाके देखो, आप अगर देखो उत्तर भारत में तो कोई मंदिर नहीं है ना, सब टूट गए, सब मॉडर्न मंदिर हैं सब। आप दक्षिण भारत के मंदिरों में चले जाओ, ऊपर गोपुरम पर मूर्तियां बनी हुई है ना जी,
जो देवी देवता यक्ष बहुत सारे मूर्तियां बनी हुई, तो आप उनमें लेडीज मूर्तियों को ध्यान से देखो, उनमें सब में जो पवित्र है उपनयन है, इससे बड़ा है क्या होगा। और आप जो शिल्प शास्त्र वाले हैं, जो दक्षिण में उनको कहते हैं स्थपति, वो स्थपति के पुस्तक में भी लिखा हुआ है कि आप जब ये मूर्ति बनाओगे तो उसके अंदर उपनयन होना चाहिए, उपनयन होना चाहिए। तो ये सब चीज तो प्रमाण है। तो यानी अगर मैं अपनी बेटी का भी उपनयनम करना चाहूँ तो कर सकते हैं, करना चाहिए। अब हम आज स्वामी जी मैं कहती हूँ कि स्कूल जाने से पहले बच्चे की मॉडर्न उसमें भी एक सेरेमनी करते हैं कि स्कूल जाएगा पहली बार उसको भेजने के लिए, जैसे बाद में भी सेरेमनी। तो ये भी ये जो पवित्र संस्कार जो होना उपनयन कि गुरु के पास पढ़ने से पहले की जो ये प्रक्रिया है, उसमें ये सबका ही होता था जो भी पढ़ता है। ऐसा नहीं है कि नहीं, अब उसका माता पिता भी तैयार है कि अब इसकी पढ़ने की आयु आ गई है, इसको भेजना है, वो संस्कार करके ही उसको भेजा जाता है। देखिए कई सारी भ्रांतियां आपने अभी 10 मिनट के अंदर आपने नहीं, इसको एक दूसरे तरीके से देखना चाहिए कि आफ्टर 1947 हिंदू समाज में कितनी तेजी से जो एक्सपेंशन हुआ है एजुकेशन का, एंड द सोसाइटी एट लार्ज हैज नॉट हेजिटेटेड टू एजुकेट देयर गर्ल्स एट ऑल। और इसमें why is this attitude in other societies it took them hundreds of years to get to this state। अभी भी अफगानिस्तान में भी नहीं हुआ है, देखो तालिबान के आते बंद हो गए। देखो हमारे यहाँ देखो जैसी समाज ओपन हुआ, जो हमारा समाज सनातनी पौराणिक समाज जो मूर्ति पूजा जो इन सब चीजों में विश्वास, उन लोगों ने देखो अब सनातन धर्म कन्या विद्यालय सबसे ज्यादा है, करेक्ट है ना। तो उन्होंने सबको एक्सेप्ट किया हमारे, क्योंकि ये हिस्टोरिकली हमारे समाज में इंग्रेन था। हम तो जिसको बोला ना लॉ एंड ऑर्डर के कारण से, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंट टाइप, जिसको कहते हैं डिफिकल्ट टाइम, जो में डेस्परेट टाइम है, तो उसमें डेस्परेट मेजर थे। तो कुछ हमने ऐसे डेस्परेट मेजर बनाए थे अपने आप को बचाने के लिए। जैसे ही वो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खत्म हुआ, हमने तो ये कहने पिछले 1200 साल की ये विकृति है, उससे पहले हमारी प्रकृति में ये था कि हम सबको समान तरीके से शिक्षा दें। भाई उसी कारण से तो देखो कि साउथ ईस्ट एशिया में ही देखो, इवन भले ही पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, हमने विमेन प्राइम मिनिस्टर बनाए, विमेन प्रेसिडेंट बनाए, और कहीं आज तक अमेरिका में कोई ह्यूमन प्रेसिडेंट नहीं बन पाया, मुझे बता दो। नहीं तो क्योंकि वो हमारे संस्कृति में ही so are we a belief system or are we a knowledge system? So the fundamental fulcrum of our society is knowledge. It's knowledge. So you're saying vidya and different forms. Knowledge. And it is embedded, this idea is embedded in the terminologies themselves. So you look at the Hindu society at large, and there are 4 parallel streams running. One is the Vedic stream. The other one is the Bodh stream. The third one is the Jain stream. Fourth one is the Sikh stream. Now you look at these terms: Vedic, Ved, knowledge, Vidya, knowledge. Bodh, Gautam first acquired wisdom or Gyan, Bodh, and then he became Buddha. So the followers of Gautam should have been called Gautamists, but they call themselves Bodh because they are following the Buddhi and the understanding and the realization of Gautam Buddha. Consciousness, enlightenment, enlightenment, that's what they follow. Then you have this term Jain. It comes from this root Jin. And Jin is a person who has conquered himself or herself. How do you conquer yourself? I can conquer an outsider by beating you up. But I cannot conquer myself by beating myself up. So you have to know about yourself. Again, knowledge. So again knowledge. And then the fourth word is Sikh. Sikh, Shiksha. Kiski Shiksha? Shiksha of all the gurus which have been compiled in that book. Guru Granth Sahib. They don't call it Guru Granth book. वो उसको साहिब की संज्ञा दे रहे हैं. That knowledge is at the topmost level. It is the topmost level. This is a very fundamental difference. And then you compare this with other traditions. This has nothing to do with demeaning or other things. But then in other traditions you have beliefs. So if you believe in a particular system, you are a good believer. If you do not believe and you may have the best conduct possible, you are not a good believer. You are still a non-believer. You are a non-believer. Kufr. Kufr or disbeliever. Or non-believer. Infidel. So भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति का अधिष्ठान ज्ञान है. और लास्ट पॉइंट बोलूँगा,
हमारे एक शब्द होता है सच्चिदानंद। हाँ, सच्चित आनंद। हाँ, 3 उसके धातु हैं, सत, ट्रूथ। ट्रूथ। हाँ, ईश्वर का एक रूप ट्रुथ है। हाँ, ट्रूथ। उसकी अवेयरनेस जब आएगी वो चित्त है, चित्त है, तब आपको आनंद की Bliss, प्राप्ति होगी, bliss। ब्लिस होगी। एंड यू कैन रियलाइज इट एवरी डे। जैसे मैं अब व्हेन आई सॉल्व अ मैथमेटिकल क्वेश्चन, और उसके बाद मुझे कई बार बहुत खुशी होती है। Everybody turns around and says कि Krishna also says that I first gave my knowledge to Manu and then Vivaswan, no Vivaswan and then Manu and then Ikshvaku and then कहीं ना कहीं ये लुप्त हो गया, इसीलिए मैं वापस इस कड़ी को पुनः शुरू कर रहा हूँ। ऐसी भगवत गीता में कह रहे हैं। मेरा ज्ञान सीमित है, अगर गलत है तो प्लीज मुझे बता दें। तो उसमें देन एवरीबडी टुडे एक नैरेटिव तो यही चल रहा है, ये मनुवादी हैं, तो ये वैसे ही एक तो पाखंड, दूसरा इनका ये है डिस्क्रिमिनेशन है, पेट्रियार्कल है। तो ये मनुवादी और पेट्रियार्कल ये जोड़ के बताया जाता है। ये सही है गलत है सोनिया जी? नहीं, पहला शुरुआत मैं करूंगा, फिर बाद में सोनिया ऐड करें। जी। मनु की जो बात कर रहे हो ना, देखो क्या है, मैं भी एक अखंड तमिल उलगम हिंदी स्पीकिंग आदमी तमिल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में भाषण दे के आया, कोयम्बटूर में हुआ था। मैंने उनको बताया, देखो भागवत महापुराण है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जब हम ये जो हमारी काल गणना है ना, उसमें 14 मनवंतर होते हैं, 6 मनवंतर चल गए। अभी वर्तमान में मनु के वंशज है ना, वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। ये वैवस्वत मनवंतर कौन है? राजर्षि द्रविड़ेश्वर है, सत्यव्रत मनु है। मनु हम उनके वंशज हैं, इसलिए अपने फोर फादर को तो आप नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते। इसलिए मैंने अपने लेक्चर में बता रहा था कि देखो ये मनु जो है ना, उत्तर भारत में पैदा नहीं हुए हैं, दक्षिण भारत में पैदा हुए हैं। उसी उन्होंने ही जब जल प्लावन हुई ना, फ्लड, ग्रेट फ्लड हुआ, तो उसमें बोट में लेकर हिमालय में सबको ले गए। जब पानी रिसीड हुआ तो धीरे धीरे सृष्टि बढ़ गई। तो मैं आईआईटी मद्रास में लेक्चर दे रहा था जीन के ऊपर, तो मैंने कहा देखो सब लोग कहते हैं जीन मूवमेंट नॉर्थ टू साउथ है, लेकिन एक ये भी देखो साउथ टू नॉर्थ हो गए। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया देयर इज ए मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ। तो ये जो ये कहना कि मनुवादी है, मनुवादी सब लोगों ने उसके आउट ऑफ कंटेक्स्ट उसको न समझ करके, जैसे को ना यूरोपियन लोगों ने हमें गार्बेज डाला तो उसी चीज को हमने सॉल्व आउट कर लिया ना। अब बट मनुस्मृति को कोट करते हैं, डिफरेंट पैसेजेस ऑफ मनुस्मृतिज आर कोटेड एंड सेड देखो यहाँ क्या लिखा है मनु ने, यही कहता है मनु। सी दैट्स हाउ इट इज सेड। आप क्या कहेंगे? अब इसी अर्थ में सोनिया ज्यादा एक्सप्लेन करेगी। आपको बता रहा हूँ जो आउट ऑफ कंटेक्स्ट में कैसे सारा समाज जाता है। देखो मनुस्मृति का श्लोक है जिसको सब फेमिनिस्ट लोग गाली देते हैं, वोमिट करते हैं, कि वहाँ कंटेक्स्ट देखो ना समझ में। कहता है कि लड़की जब छोटी हो, है ना, तो उसका बाप उसका लुक आफ्टर करे, है ना। जब जवान हो जाए ना, सी इज यंग, देन उसका हस्बैंड उसको लुक आफ्टर करे, है ना। जब वृद्ध हो जाए तो उसके संतान उसका लुक आफ्टर करे। अंतिम उसका स्त्री स्वातंत्र न स्त्री स्वातंत्र अर्हति, उसका कंटेक्स्ट क्या है? स्त्री वुमेन शुड नॉट बी अबंडन, नेग्लेक्टेड, है ना। अब उसको हमारे सारे फेमिनिस्ट लोगों ने कहा आपने वुमेन को फ्रीडम नहीं दिया। आप देख रहे हो, आप फ्रीडम भी नहीं दिया, और ये भी कहा कि महिला अपने आप जो है शी कैन नॉट सर्वाइव, शी कैन नॉट स्टैंड ऑन हर ओन। नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। देखो उसी में यही सब दैट्स द इंटरप्रिटेशन। हाँ, इंटरप्रिटेशन देखो, कहला उसका देखो ना, कंटेक्स्ट देखो, 3 में क्या कर, केयर फॉर, है ना, टू लुक आफ्टर। अंतिम में करा न स्त्री स्वातंत्र अर्हति, उसको आप मॉडर्न कंटेक्स्ट में अपनी ओर से जिसको मैनिपुलेट करके इंटरप्रेट कर, उसका मतलब है कि यहाँ स्त्री शुड नॉट बी अबंडन्ड इन एनी केस। करेक्ट, बट द काउंटर आर्गुमेंट टू दिस सोनिया जी एंड आई एम आस्किंग इज, ऑलराइट, इंटरप्रिटेशन इज रॉन्ग, but where is it written that a stree should not abandon a purush? Why is it written that a father, a husband or a son should take care of the stree, but the other way around is not written? ऐसा I will give you, now Sonia will tell you, other way I will tell you. ऋग्वेद में लिखा है कि wife should take care of the husband like a son. हाँ, 10वें मंडल की माँ है ना, 10वें मंडल का मंत्र है, उसमें कहता है वाइफ शुड टेक केयर ऑफ हस्बैंड एज ए वन सन। उसमें तो पूरा वागाम्भृणी सूक्त ही आता है, जिसमें वो कहता है अहम मूर्धा, अहम राष्ट्र की जो स्त्री है वही पूरा राष्ट्र है, मूर्धा है वो, उसको आगे लेके जाने वाली जो है वो एक महिला ही है। उसमें ऐसा पूरे समाज को वो लीड कर सकती है, नेतृत्व देती है, ऐसा करके पूरा सूक्त ही है ऋग्वेद में वागाम्भृणी सूक्त उसको कहा जाता है। अभी पूरा मंत्र उस तरह से याद नहीं आ रहा है, तो उसमें वो अहम मूर्धा, अहम केतु,
कि मैं ध्वजा हूँ, जैसे ध्वजा किसी उसकी प्रतीक होती, चिन्ह हम दूर से देख के बता सकते हैं, तो ऐसे में किसी समाज की नारी ध्वजा है कि वो जैसी नारी होगी तो उसका मतलब तो वो समाज का नेतृत्व कर रही है। दूसरा से आप जो कह रहे थे कि कभी हम मनु को लेकर के, कभी हम किसी और को लेकर के ये कहते कि वो बायस्ड है नॉलेज सिस्टम, पर मैं आपको एक एग्जाम्पल से ये बताना चाहती हूँ कि जितना अपना ये जो ज्ञान परंपरा है वो कितनी एक समष्टि आधारित है, न वो किसी व्यक्ति पर आधारित है, न मनु पर, न किसी पर भी, वो एक समष्टि पूरी उसकी व्याख्या करती है। जैसे आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, या अभी विश्व के देशों ने मिलकर के 17 सूत्र बनाए हैं कि हम प्रकृति का दोहन ना करते हुए एक विकास कर सके। उसमें आप देखिए, आज आप बिना घड़ी के टाइम नहीं बता सकते, आप बिना कैलेंडर के आज डेट नहीं बता सकते हैं, पर हमारा वो जन समुदाय, वो अनपढ़ महिला जो लास्ट आज जिसको हम अनपढ़ कहते हैं, उस दृष्टि से भी देखे, अंतिम व्यक्ति तक चंद्रमा देख करके तिथि बता सकता था, सूर्य देख करके वार बता सकता था, नक्षत्र देख करके वह आज कौन सा मास है यह बता सकता था, कोई पेपर वर्क नहीं है।